So, good morning, dear student. Let's see a numerical which is based on that equation of torsion. And we are now much familiar with the equation of torsion. And so, let's by using this equation of torsion and as well as it's we have seen the last class the what is the combined effect of torsion and bending on the shaft. And today we are going to be a solve a problem, a small problem, which is subjected to the same combined effect of torsion and bending. Let's see that. But shaft is a hollow shaft now. So let's move ahead. Okay. So this is a problem statement is there. A generator shaft of hollow circular cross section with the outside diameter 200 mm and inner diameter is 160 mm is subjected to a torque of 11.1 kilonewton meter, axial compressive load of 362 kilonewton. Determine the maximum tensile stress, maximum compressive stress and maximum shear stress. So dear students, the few data is given in this problem. The compressive load is given is 362 kilonewton and the cross section diameter, inner and outer diameter is also mentioned as given in this question. Okay, so we can solve by the simple using this formula P upon A. So where the P, you all the question में दिया हुआ है P and what is the A? A is the pi by 4 D outer की square minus D inner square. You all know that how to calculate the area of cross section of a hollow shaft. So this by using this formula. So we have in this question that 362 is the value of P. The where 362 is P. Directly you can say 362 is the value of P and D1 and D2, or you can say DOD minus DI, outer minus inner. So outer is given, how much it is given? It is a 200, you can see here, and inner one is that 160. So this is the inner diameter. So you put the both all the respective value in this formula, this one P upon A. So we will get this 32 megapascal because it is directly so sad in this question the axial compressive load. So it means the stress which is produced in that shaft, it will be compressive stress. That's why we have written the C in the bracket. It means it's a compressive stress. So now we have calculated the stress, compressive stress acting on the shaft, and we have that torque, that twisting moment is acting on the shaft, that is 1.1 kilonewton meter, like this 11.1 into 10 to the power 6 we have converted in the Newton mm. Okay. Now you see the what we have to be calculated and what is our objective. Our objective is to be calculate the maximum tensile stress, maximum compressive stress and maximum shear stress. इसका मतलब है maximum tensile is means nothing but sigma 1, sigma 2 we have to be find, and tau max we have to be calculate. What that question में यही पूछा है. So we have to be find out these three value here. So simple, we all studies the simple formula for that in the last class itself. So just apply that formula, you will get the all the respective value of this question.
Okay, let's move. So we have, so dear students, we have two options to solve this problem. We had directly we had this value of t, and we can find out. Okay, so this we have T, and this is not a bending stress. Okay, but this is what? This is axial stress. So that's why we have not converted into M. Directly we have taken a sigma because this is axial one. If it is a bending, so we do what we will do, sigma y, sigma upon y is equal to M upon I. We will use this one, this formula, and we will find out the m and use that one, under root of, yeah, m plus minus m chi square plus t chi square, what we have last discussed, 16 upon pi d ये वाला, ये यूज करते हैं, लेकिन नहीं, now the one thing is a different, this is the axial load, loading is the axial. So in this case we have to be convert this t into shear stress tau. So we have that relation, कैसा, देखो जरा यहाँ से. सो मेरे पास जब t है तो नाउ आई एम एबल टू कैलकुलेट द टाउ. सिंपल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन से, यही फॉर्मूला. आप क्या किए इसमें देखो जरा, इसको किया है आपने पाई, इसको कर दिया टी, टी कर दिया, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ. तो अपने को निकालना है, देखो जरा टाव निकालना है, ऊपर हो गया टी, नीचे आ गया बेटा आपका पाई अपान, पाई अपान एक्चुअली 32, 32 आएगा, 32, 32 इंटू द सेम फॉर्मूला, डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर, इनर आई, डी इनर की पावर 4, ठीक है. एंड that is the r become the outer because you will get the maximum shear stress at the outer radius. So अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 32 से 16 हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी 16t do upon pi d o की पावर 4 माइनस d inner की पावर 4. So this formula we have used directly here, आप देख सकते हो. तो we have received here, we have got here that value of shear stress, that is 11.97 megapascal. So simple, that relation only we will be use that sigma by 2 plus minus under root sigma, sigma by 2 का whole square plus tau square, and put the all respective values. We have the sigma value, we have the tau value, put all values, so we have obtained the sigma 1 and sigma 2. अब इसकी वैल्यू हमने रख दिया, देखो जरा 32/2 एंड 32/2 का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम आधा हो जाएगा 16, 32 का आधा 16, देन प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम दैट 20 megapascal. Up when you take the positive value, then you will get the 4 megapascal, and when you get the negative one, so this become 36 megapascal, and minus means compressive. So in question, what they ask, maximum tensile stress and maximum compressive stress. So you have got the maximum tensile stress is 4 megapascal, maximum compressive stress is 36 megapascal. So this is your desired result, what you are going to find for this question one. So let's see
the next part, the maximum shear stress. So how to calculate the maximum shear stress? So shear stress, in the last class we already discussed about about the formula of the shear stress. Formula of the shear stress is nothing but, you can see my dear student, this is the, यहाँ से इसको ले लो आप, तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द शेयर स्ट्रेस. चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं इसको. सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, नेक्स्ट स्लाइड में आपको चलते हैं. लेट्स सी. सो वी ऑल नो दैट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस tau max equal to plus minus सिग्मा by 2 का whole square plus tau square. We all know the respective value of sigma and tau. So 32 by 2 का whole square and 11.97 का whole square. So यहाँ आपको मिल गया plus minus 20 megapascal. So this is the value of maximum tau. ठीक है, मैक्सिमम टाउ. सो आपको इस प्रॉब्लम में, आप समझिए थोड़ा, इस प्रॉब्लम में आपको निकालना था मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, एंड यू आर calculated this in this problem. But one thing is need to be understood here, because this is not a bending stress, this is a compressive stress or axial stress. It may be tensile or compressive. Whenever directly they are asking, they are giving that tensile stress is there, so आपको इस फॉर्मूला, इस इन दिस वे आपको ये लगाना पड़ेगा. और अगर आपको ये बोला दैट इज ए बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा की बात कर रहा हूँ, इफ दे आर टेलिंग यू दैट इज ए बेंडिंग स्ट्रेस, सो आप उसको एम निकाल लीजिए वहाँ से और वो फॉर्मूला यूज कर लिए जो हमने कल यूज किया था. क्या यूज किया था आपने कल? निकाला था एक 16/πd³ m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t square. We can use that formula for bending stress. Now the stress is the axial. When there is the axial one only, it may be tensile or compressive. So we can use this formula, and by using this formula we can calculate the maximum tensile stress and maximum compressive stress. And dear students, that maximum means these are the principal stresses, because the principal stresses are the maximum and minimum in nature, which is acting on the any given plane. Okay, so किसी भी plane पे they are acting. If suppose in this question they may ask what is the position or orientation of the principal plane or maximum or minimum shear stress plane, so that simply आपको एक सिर्फ एक चीज ही ऐड करना था. क्या ऐड करना था? कल आपने पढ़ा था tan थीटा. क्या निकालना था आपको? दैट tan थीटा 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा हो जाएगा यहाँ. 2 tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या था? t अपॉन m. ये आप ऐसे निकाल सकते इस फॉर्मूला को यूज करके. सो अगर ये पूछता तो आप इससे इसको डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला वाली. ओके, सो ये कर सकते हैं आप. और नहीं डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, सॉरी, ये वाला t/m नहीं हो जो होगा यहाँ पर बेंडिंग नहीं है ना. सो हम देखो क्या करेंगे, इसकी जगह हम लगा देंगे टाउ अपॉन 2 अपॉन सिग्मा बाय 2. सो दिस goes to here. So this will be 2 tau upon sigma. So ये हो जाएगा tan 2 tan theta 1. ये देखो ये इसकी जगह. तो this formula can be used in the case of where the axial or tensile, ये वाला तो क्वेश्चन में होगा कि टेंसाइल लोड और टेंसाइल और कंप्रेसिव एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट.
सो आप ये फिर टाउ और सिग्मा डायरेक्ट रखना पड़ेगा, फिर आप टी एम में नहीं जाओगे। टी एम के चक्कर में टी एम तब लगाओगे जब आपका बेंडिंग वाला लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में दो तीन चीज़ नहीं थी, आपको बताना था जो मेरे को। एक तो सॉफ्ट वॉज क्या था, हॉलो सॉफ्ट था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये टी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि दैट इज एक्सियल वन, नॉट ए बेंडिंग स्ट्रेस। जब बेंडिंग होगा तब टी एम में जाओगे। तो समझ में आया? तो ये चीज़ एक नया चीज़ इन्फॉर्मेटिव था इसमें। अच्छा है आपने आज इसको देख लिया। सो लेट्स गो अहेड। So this is all about this problem. So hope you are understood. Thank you so much for being here.